So you can click on the FB here. So let's first see the difference. What it is written over here. Okay, in FC there is a no memory, but in FB, but FB stores their value permanently. That is because of instance data block. So it will remain available even after the block has been executed. Okay, so let's take a FB. Okay, so as you were writing a logic in case of FC, in the similar manner you can write. If you look at the interface table, in interface we have input, we have output, we have in out, static, temp, constant. So whatever I am having, just a minute, I need to take a one call. Just allow me a minute. Okay, so the interface table is almost similar. The only thing is here is missing is the return variable. But we got one extra thing, that is static. So the difference between temporary variable and static variable is temporary variable doesn't remember the value for the next cycle, but that is not a case with static variable. A static variable store their value permanently. So it will remain available even after the cycle completes. So whatever the holding problem that we were getting in the FC, if you will use the static variable, that you won't find that problem. Okay, so let's for us suppose start. Here I have stop color, and let's take output. I have motor. Let's take one static variable for holding or stat, and constant I am taking set point, and I will configure one more output, that is RP. From stat, I will trigger motor. Okay, here I need to change to integer. Okay, this is what I have written.
So now for the execution, I need to call it in OB. So let's call this OB here. Now click on OK. Now here you can see. So first difference, if you will take FC and FB, is that in case of FC, you need to define the variable. It is must here. You can't skip it. But in case of FB, if you don't require or if you don't need to define any variable, you can left it empty. That's not a problem. Because all the variables have some default values that is coming via the instance DB that you have connected. Let me call it again. Hit it. So as you will try to call FB, here you can see it is asking you for the DB. So single instance. And it is written over here. If you call function block a single instance, the function block save its data in its own instance block. So this is the instance block that get created with this particular FB. And if you go inside that particular DB, it will have all the variables that we have defined. So whatever we have in the input, whatever we have in the output, whatever we have in the in-out. And the interesting part is, if you have defined something in the static, that will also be a part of your data block. That's why whatever the value that you define the static variable, it stored permanently. So if you want to execute it, so for execution purpose, here you can see this is my FB and here is my DB. Even if you want to write it from some instructions, you can write, or even you can give the command from the DB itself. Download is pending. Okay. So here you can see. If I want to give the start command, yes, I will give. Here you can see now static variable. Unlike your temp variable, static variable helps in your holding. Even if you will remove the true command, here you can see a static variable remain, hold, and that state. And now whatever the set point that you will define, modify. Okay, I need to enter it in the default value. So let's suppose 500. Okay, so here you can see 500 is transferring into the RPM. Now, even if you will remove the stat command, so from here you can see, if you will remove it, now still the value at RPM is 500. Here you can see the value is still 500. अगर ये FC होता तो ये value अभी तक 0 हो चुका होता. So in case of FB, because of instance data block, FB store their value permanently. Understood? Okay. So now, so in this example, I have given values directly from this uh, data block. But if you will write something over here, that is also possible. If you have some variable like I0.0, so what it will do? From I0.0, start command will come. This will go to the data block, and from data block, it will go to the respected FB. But for calling FB, na, you have multiple options.
For calling FB, you have multiple options. Means, let's see. When I am calling FB here, I am getting only one option here. That is single instance. It is the case when you calling FB inside the OB. So if you're calling any FB in the OB, then you will get only one type of calling instance, that is single instance. But the problem with single instance is that if I have an instance of 25 motors, correct? If I have an instance of 25 motor, I need to call this FB 25 times, and every time I need to create one DB, like DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, so on. I need to create 25 DBs, correct? So is there any way to optimize that? I want only 1 DB, and in that DB, I want the data of all the 25 instances. That would be better approach, no? Instead of having individual DB again and again and again and again. So instead of that, I will have only one instance DB that will take care of my all the instances. Is it possible? Yes, of course, is it possible, but not in a case with single instance. You need to go for the multiple instance. So how you are going to create multiple instance? So first thing for multiple instance is that you need to call one FB into another FB. Then only multi-instance is possible. So for multi-instance, I need to call this FB1 into another FB. So for that, I need to create one more FB. So this will be that I'm naming it as multi-instance. Okay. So here I have FB2. I will call this FB1 inside the FB2 here. Now you can see I have two more options. One is multi-instance. Another one is the parameter instance. Multi-instance and as well as parameter instance. So single instance you have already seen. Let's click on the multi-instance. So multi-instance, you can read a description also. If you call the function block as a multi-instance, it saves its data in the instance data block of the calling function block and not in its own data block. This allows you to concentrate the instance data. This is the important point. This allows you to concentrate the instance data in a single block and to get with fewer instance data block in your program. तो जितने भी डेटाज हैं that you can able to concentrate in a single instance data block. हर बार अलग अलग डीबी बनाने की जरूरत नहीं है. Okay, so click on the multi-instance. It will click on OK. Now here you can see I have called that FB as a multi-instance over here. Now it doesn't ask me for a DB. By default, one variable is created. It is coming like something hash DOL FB instance. So what is the meaning of hash in FB? Like here, if I have defined FB1, all variables are coming with hash. What it means? Hash means. This hash means you have defined something locally in this particular FB. And exactly that hash is coming in FB2 here also. So this hash means something got defined in the interface table. So as you will create multi-instance, now here you can see by default that variable got added inside the static variable of the FB. So multi-instance is nothing. It is the static variable of your FB. So in TIA portal, you are getting this type of task card. Na? Ki
how you want to call. You want to call as a multi-instance, you want to call as a parameter instance. But when you are working with the semantic manager, in semantic manager doesn't have this type of simplified option. Over there, if you want to create a multiple instance, you need to define that particular FB inside this multi-instance. Directly you have to define where. But in TI portal, you got this simplification and you have that particular option. So anyhow, either you define it in the static directly, that is also multi-instance, or you can use the pre-programmed options for that. So this is my first instance. You want to call it again, you have to call that again, but again, click on the multi-instance. So this will be my instance number 2. If you want more, okay, go for the third one, multi-instance, okay. So here you can see, this is my first instance, second instance, and third instance. Still, I haven't created any DB yet. So this will be, suppose, my instance of motor 1. And then here I have instance of motor 2. And here I am making instance of motor 3. Okay. Motor 1, motor 2, motor 3. So FB1, I have called it in FB2 as a multi-instance. Now I have to call this FB2 inside OB1. So if I will try to call FB2, here you can see, I will get only one option, that is single instance. Now click on OK. It will ask, it has assigned 1 DB, that is DB3. So DB3 will have all the concentrated data of these 3 instances, I1, I2, motor 1, motor 2, and motor 3. So if you open this, ULFP, multi-instance DB. So here you can see, I have nothing in the input, I have nothing in the output, I have nothing in the in-out, but in static, I have 3 variables. ULFP instance, DLFP instance 1, and FP instance 2. So as we have defined in the static variable, और हमें पता है कि अगर static में define करते हैं तो we don't need to pass any parameter for that. इसलिए यहाँ पे कोई भी parameter नहीं आया है. Correct. So let's download everything. And here you can see. Okay, so this is your multi-instance. If you want to give the command, you need to open your multi-instance FB. So here I have all those 3 instances. Here you can see instance number 1, instance number 2, and instance number 3. And all the concentrated data you will get in this DB. So anyhow, like if you want to execute, there you can see. This is my first instance. As I will turn it on, here you can see it is on now. And if you want to monitor, here you can see. Here it is start. If you will give the stop command, now here you can see it has become stopped. Now for the second instance, this is my second instance. If you want to give the start command, this should get start, but
Now the call environment is set for the instance number 1. You need to change the call environment. So either you can go to the block or double click on it, or else you can change it from here. So currently I want to monitor for the second instance, multi-instance. Just click over here and click on OK. So now it will give the monitoring of the instance number 2. So true. Now let's make a stop. Yes. So if you want to monitor 3, again, go change the environment. Number 3. Okay. And from here you can test that is true. That is false. Correct. So this is the advantage of having your multi-instance. No need to create individual DB for individual instance. For us, from the single DB, you can have the multiple data with you. Understood? Yes, sir. Okay. So now, even it is multi-instance now. As I have called 3 instances, now it is very small program, so I don't mind to write 5 or 6 variable over here. Correct now. If I have the variable from the outside, I can connect directly over here, from here to here to here. But now if there is a requirement of 50 or 60 variables that I need to enter, यहाँ पे around 50-60 variables आपको connect करने हैं. So is it ideal approach for parameterizing your FB? क्योंकि मुझे अभी 50 से 60 पैरामीटर्स यहाँ कनेक्ट करने पड़ेंगे, 50 to 60 पैरामीटर्स यहाँ कनेक्ट करने पड़ेंगे, 50 to 60 पैरामीटर्स यहाँ कनेक्ट करने पड़ेंगे. करेक्ट ना? So is there any provision so that we can minimize this type of thing? कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे 50 से 60 बार डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े, मैं एट अ टाइम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप कनेक्ट कर पाऊं. Understood my question? Okay. So this optimization requirement is fulfilled by the third type of instance, that is parameter instance. So again, parameter instance is also possible only if you will call one FB into another FB. Like go for add new block. I am getting an FB and I am naming it as parameter. Parameter instance. Okay. So here I have called this FB as a parameter instance. Now I will call parent FB, dual FB as a parameter instance. As a parameter instance. Correct. Now click on OK. Again, let's take one more dual FB as a parameter instance. Okay. Dual FB as a parameter instance. Okay. So 3 instances I have created. So again, it is hash. Again, it is hash. What it means? It has defined inside our interface table, but there is a difference in multi-instance and in parameter instance. Multi-instance got created inside the static variable, but this parameter instance got created inside your
in out section. Okay, so in this in out section, just a minute. So parameters in out. So if I will call this in OB1, here you can see what should happen. Last time हमने call किया था as a multi instance. So multi instance was in the static variable. That's why nothing come over here to parameterize. But now it is in input output. So as you will call parameter instance, it will ask you for the single DB. That's fine. Here you can see DB4. So this DB4 will have all the data of parameter number, instance number 1, instance number 2, instance number 3. But what should I connect over here? क्योंकि अपना पर्पस क्या था? द पर्पस वाज दैट कि जो भी ये वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए, जो इंस्टेंस 1 क्रिएट किया है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्रिएट करने की जगह पे मुझे क्या करना था कि मैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ डेटा क्रिएट करूं जो इन सभी वेरिएबल को एट अ टाइम एक्सेस कर पाए. स्टार्ट को, स्टॉप को, OLR को, मेरे को एक एक वेरिएबल कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े. So that's why we have defined in the parameter instance, और parameter instance में define किया. So now come to OB1 and OB1 अभी मैंने यहाँ पे उसको call किया है. So what should I connect over here? मैं यहाँ पे क्या connect करूं ऐसा कि वो instance number 1 के सभी वेरिएबल को एक्सेस कर पाए? DB. DB, but DB of what? So DB1. DB1, okay. डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट कर सकते. See, if you look at this instance, parameter instance, what we need? A start, stop, OLR, motor, RPM. These 5 things we required. Correct? तो ऐसा कौन सा DB है जिसमें ये सभी पैरामीटर हैं? तो we have that in FB1. FB1 के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे, we have exactly same. Start, stop, OLR, motor, RPM. So can we create variables from this? Yes, we can. So what you need to do, go to add new block. In add new block, now you need to go to the data block. Data block, I am naming it as suppose instance 1. Instance 1. Now what you will select over here? Here you will select, I want to create a DB of this particular instance, FB1 ka instance. Because FB1 has exactly the same variables that we need. So FB1, now click on OK. So here you can see in DB, I have that exactly the same parameter. Input, output, in out and static, what we need, and we can connect that DB of instance 1 directly to over here. In the same manner, you can do for this 2 instance also. That new block, DB, type should be DLFP, instance 2. Okay. And then one more that we can have DB instance 3 and type will be FP1. Okay. So instance 2, instance 3. That's it. So now if you will download, so here you can see with DB5, I can control the instance 1. So let's open DB5. Here I am having DB5 and open
the logic of DB5. So FB1. So here you can see. Now, first I need to set the call environment path. So I want to control it from this DB5. Okay. Now make it true. Yes. Okay. And now make it this false. So now no need to specify the value individually to each parameter. You can directly create a data block of those particular variable and connect directly to the parameter instance block, and that parameter instance block will directly give command to your FB instances. You understood? Sir, can you repeat again, sir? Yeah. हेलो Yes, yes. सर ये इंस्टेंट डीबी दोबारा बता देना सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार फिर से बता दो आप। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ठीक, मल्टी इंस्टेंस क्लियर है ना सबको? हाँ सर, मल्टी इंस्टेंट क्लियर है। ओके, सी मल्टी इंस्टेंस में मुझे क्या करना पड़ रहा था? ओके, एक डीबी हमने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने हैं ना, वो इंडिविजुअली करने पड़ेंगे। करेक्ट ना? तो यहाँ पे 5 थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजिली कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये 50-60 रहा तो एक एक वेरिएबल डिफाइन करना मल्टीपल टाइम्स काफी हेक्टिक टास्क है और टाइम टेकिंग है। करेक्ट ना? सो इसके लिए यस हमने सर, क्या यस किया? सर। इसके लिए क्या किया, एक पैरामीटर इंस्टेंस बनाया। ठीक है, मीन्स एक एफबी बनाया, उसमें दूसरे एफबी को एज अ पैरामीटर इंस्टेंस मैंने कॉल किया। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर इंस्टेंस जैसे कॉल हुए, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो मल्टी इंस्टेंस वहां पे स्टैटिक में हो रहा था, ये यहाँ पे कहाँ पे कॉल हुआ? इन आउट में कॉल हुआ। करेक्ट? हाँ जी सर। और हमें पता है कि अगर हम कुछ वेरिएबल इनपुट में डिफाइन करते हैं, आउटपुट में डिफाइन करेंगे या इन आउट में डिफाइन करेंगे, तो मुझे पैरामीटर पास करना ही करना पड़ेगा। हाँ सर, करना तो पड़ेगा। इस पैरामीटर इंस्टेंस को मैंने ओबी में कॉल किया। हम्म तो ओबी में कॉल किया तो ये तो आया, डीबी आया सिर्फ, ये मेरा हम्म। एफ बी हुआ, एफ बी थ्री को एग्जीक्यूट करने के लिए DB4 लगेगा। इसको मैं फिर से कॉल करता हूँ, यहाँ देखिए, ये FB3 है। हाँ जी। FB3 को कॉल किया। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है मेरे पास, एज अ सिंगल डीबी ही मैं कॉल कर सकता हूँ, सॉरी सिंगल इंस्टेंस ही कॉल कर सकता हूँ। हाँ सर। तो सिंगल इंस्टेंस कॉल किया तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक डीबी लगेगा। हाँ सर, वो परफेक्ट, रेडी भी लगे। वो लग गया ये। ठीक है, हम्म हम्म। अब लेकिन ये तीन जो बने हैं, हमने इन आउट में जो पैरामीटर डिफाइन किया उसको तो पास करना पड़ेगा ना पैरामीटर, इन आउट सेक्शन में जो डिफाइन किया है। हाँ सर। इन आउट में 3 डिफाइन हो रखे हैं हमारे, ये देखिए, ड्यूअल एफबी इंस्टेंस 1 और 2। इसको कुछ तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, हाँ और करेक्ट सर। वही और वही चीज यहाँ पे वो पूछ रहा है पास करने को। नहीं होगा। करेक्ट? तो अब यहाँ पे क्या करेक्ट पास सर। करोगे आप? क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे इसका फिक्स है, डेटा टाइप इसका फिक्स है कि इसका डेटा टाइप बुलियन है, तो यहाँ पे आप कोई बुलियन डेटा डालते हो। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंस है ना? इंस्टेंस मतलब यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है, इन आउट ड्यूअल एफ बी, है ना? तो ड्यूअल एफ बी मतलब वैसा वेरिएबल डालना पड़ेगा जो कि सारे के सारे वेरिएबल्स जो ड्यूअल एफ बी के हैं उसको वो ये कर पाए, एक्सेस कर पाए। करेक्ट? करेक्ट सर। तो हमें वैसा वेरिएबल्स, वैसा डेटा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू ब्लॉक में जाइए और यहाँ पे डेटा ब्लॉक का टाइप चेंज कर लीजिए, दैट इज DOL अंडरस्कोर FB। DOL अंडरस्कोर FB। तो अभी जो डेटा ब्लॉक बनेगा वो क्या बनेगा? इसका इंस्टेंस बनेगा।
तो एफबी में जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, अगर हम उसका इंस्टेंस डेटा ब्लॉक बनते हैं तो एग्जैक्टली वही वेरिएबल्स आएंगे। तो करेक्ट सर। उसी उसी में मैंने ये 3 इंस्टेंस बनाए थे, DB5, DB6, DB7। तो अभी DB5 जो करेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, दैट इज मोटर 1। DB6 जो करेगा मोटर 2। DB7 जो करेगा दैट विल बी मोटर 3। अब करेक्ट आपको सर। इंडिविजुअल पैरामीटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये डेटा ब्लॉक आपको पूरा सर एक कंट्रोल चीज कर और देगा। बताना सर, अगर जैसे हमने जो ये अपना एफबी बना रखा है, अगर हम्म इसमें माइनर माइनर चेंजेस रहेंगे तो उसको कैसे करेंगे सर? अगर किसी में जैसे कोई अपना एक सेंसर की वैल्यू आ रही है, किसी सेंसर की वैल्यू नहीं आ रही है, और मुझे हम्म। उसमें वो चीज हटानी है, तो उस उसको तो नहीं कर सकते ना सर वो? नहीं, अगर हटा दिए तो अब तो सारे के सारे डेटा ब्लॉक से हट जाएगा। सारे में हट जाएगा। यस। और अगर कि जैसे हमारे 10 ब्लॉक है, 10 जगह से आ रहा है, एक में हम्म। नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे सर? उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा या फिर इसी से काम हो जाएगा अपना? अगर एक 9 में यूज हो रहा है, एक में यूज नहीं हो रहा है, ऐसा ना? हाँ सर, एक सिंगल सेंसर मिसिंग है उसमें, एज ए इनपुट, एक इनपुट उसमें मिस है। स्किप कर सकते हैं, बट अगर हटा दिए तो वो सब में हट जाएगा। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जैसे अभी इसको आपने कॉल किया ना, हाँ हाँ। सपोज इधर कॉल किया, तो जिस जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में वो चीजें हैं, स्टार्ट स्टॉप वगैरह, वो है ना, तो उसको आप ये यूज करके रख लो। मीन्स हम्म। बाकी जैसे आपके 9 के 9 मोटर है, 9 के 9 मोटर में आपने कनेक्शन कर रखा है। 10वां हाँ मोटर सर। में सपोज करिए आपका OLR खराब है। हम्म। 10वें में OLR खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ का एड्रेस हटा दीजिए। एड्रेस हटा अच्छा। सकते हैं, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू लाइक जैसा रिक्वायरमेंट है आपको, फॉल्स ट्रू जो रखना है रखा जा सकता है। हम्म। लाइक इधर भी अगर 3 में से एक का, DB7 का आपका इंस्टेंसेस नहीं यूज करना है आपको, है ना, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू आप चेंज या स्टार्ट वैल्यू आप चेंज करके रख लीजिए, फॉल्स ट्रू या कोई सेट पॉइंट पे रखना है तो। हम्म। तो बाकी सभी चीजें इनपुट से राइट होंगी, और ये वाला आपका DB के डिफॉल्ट वैल्यू से होगा। हाँ, बट ओके ये सर। चीजें FB में ही कर सकते हैं, FC में नहीं कर सकते ये। हाँ ये भी मैं कर सकते हैं सर। क्योंकि FC में आपको कंपल्सरली डिफाइन करना ही करना पड़ेगा वेरिएबल, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट सर। ओके। थैंक यू सर। यस, वेलकम। समझ में आया? FC, FB, सॉरी, FC, DB, FB, इन FB सिंगल इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस, देन वी हैव पैरामीटर इंस्टेंस। यस सर। ओके, तो एक छोटा सा टास्क कर लेते हैं। हाँ सर, मेरा एक और छोटा सा डाउट था। हाँ हाँ। सर अगर जैसे मैंने कोई नेटवर्क बना रहा हूँ, उसमें टाइमर लगा दिया हूँ, तो ओके। टाइमर से जो हमारा जो आउटपुट हाई करवा रहा हूँ, उसको हम्म। बाईपास करने का डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करता हूँ, तो सर वो काम नहीं करता? जैसे बाईपास करने के लिए नीचे से यही एक लेडर में एक वो अपना लगा दिया, अ, ये NO या NC, ओके। तो सर वो तो काम नहीं करता सर। उसका कोई और तरीका है सर कि उसको टाइमर को बाईपास कर सके? नहीं, मैं समझा नहीं क्वेश्चन, एक बार मुझे दिखाएंगे क्या करना चाह रहे हैं। वैसे अभी मैं जो टास्क देने वाला हूँ उसमें टाइमर यूज हो रहा है, तो उसी टाइम मेरे को दिखा दीजिएगा अच्छा क्या है। ठीक है सर, मैं अभी या अभी आपको बता दूंगा। प्रोग्राम पड़ा है आपके पास तो वो शेयर कर दीजिए, मैं देख लेता ओके हूँ। सर, मैं बता दूंगा सर। ठीक है ओके, सो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यू कैन फर्स्ट डू इट इन द मल्टी इंस्टेंस देन पैरामीटर इंस्टेंस।
पंकज जी हो आप मीटिंग में? हेलो। हाँ यस पंकज जी, आपका आपका हूँ भी सर रजिस्ट्रेशन अभी मिसिंग है। फिल नहीं किया आपने? नहीं अभी फिल नहीं किया है सर मैंने। हाँ ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चैट बॉक्स में वो लिंक पड़ा हुआ है, उसको क्लिक करिए और प्लीज फिल कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। करता हूँ सर।